Hi everyone, so we are going to start with the second part of Plant Kingdom, and the second part is the second division of Plant Kingdom, that is Bryophytes. Okay, so in the last class we talked about the first division, that is Thallophyte, and today we will try to complete both Bryophytes and Pteridophytes, which is the third division. Okay, so let's start. Plant Kingdom, Lecture 2. Second division is Bryophytes, okay, or it is also called Bryophyta. So I will write Bryophytes. Okay, now Bryophytes, they have some sort of body differentiation. Now, unlike the case of Thallophytes, like in case of algae, they don't have any kind of body differentiation. But in case of Bryophytes, they have some kind of body differentiation. So body is divided into some root-like structures, some shoot-like structures. Okay, you can say leaf-like structures, or some root-like structures, leaf-like structures, or some stem-like structures. Okay, so these different types of structures are present in case of Bryophytes, which are absent in case of Thallophytes. Okay, so first point is they have some kind of, or you can write some sort of body differentiation. They have some sort of body differentiation, but I cannot say that body is totally differentiated. It is some sort of, okay, kind of. Okay, second thing, this is very important, so I will write Bryophytes are also called amphibians of plant kingdom. Bryophytes are also called amphibians of plant kingdom. Okay, plant kingdom. Why are they called amphibians of plant kingdom? Let's understand this. Now, amphibians literally amphibian means, for example, if I write frog, toad, these are the examples of amphibians. Now, if I consider the example of these two, and if I elaborate this example, like in case of frogs and toads, what happen? They reproduce inside water. Okay, how do they reproduce? Let's see. So if I say frog की बात करें, frog, the male frog and the female frog, both of them lay their gametes. Lay gametes or not lay gametes. They release their gametes. That is a good term. Release their gametes. Okay, the male will release the male gamete, the female will release the female gamete into water, into the water body, like pond, okay, or river, wherever the frog lives. In that area, they will release the gametes, okay, into water. Now, these two gametes will flow in the water stream, and they will eventually meet, or they will fuse together to form the zygote. Now, this fusion takes place outside the body of female frog. Okay, fusion occurs outside the body, outside the body of frog, of normally female frog. Body के बाहर होता है. That is not the case in case of humans. In case of humans, what happens? Fertilization takes place inside the body of female. Okay, the sperm and the egg, they fuse together inside the body of female in case of humans and other mammals. But in case of amphibians, the case is like the fusion will take place outside the body. Okay, that is inside water. So I can say that in this case, water is essential. In this case, water is essential for their reproduction. Water is essential for their reproduction. Reproduction के लिए water is essential. Okay, so this is the case in frogs and toads. Now, if you compare this case with that of Bryophytes, now what happens in case of Bryophytes? Let's see. So in case of Bryophytes also, the gametes, the male and female gametes, the male and female gametes, they fuse together. They fuse in water. Okay, and I can say that water is required for their sexual reproduction.
water is required or it is essential for their sexual reproduction process, and that's why this process of sexual reproduction in case of braphites is similar to that of the amphibians, okay, because in both the cases we can see that water is essential for their reproduction. Okay, water is essential for the reproduction of amphibians as well as it is essential for the reproduction of braphites. So on the basis of this similarity, I can say that braphites are similar to amphibians, and that's why they are also called, braphites are also called amphibians of plant kingdom. Okay, braphites are plants, but amphibians are animals. So I can compare them and I can say that braphites are amphibians of plant kingdom. They are similar to amphibians because their mode of reproduction is similar to that of amphibians. Okay, so this is an important question in case of school exams. School exam में आता है. So you have to elaborate things, you have to explain things, that how can you see that amphibians of braphites are amphibians of plant kingdom. So you have to explain each and every term which I have written here. Okay. Please copy this part first. Okay, done. So I'm going to erase this. Let's talk about the next part, the next characteristic feature of graphite, that is the habitat. So please give the heading habitat of graphites. Habitat. So since water is essential, you can guess that graphite should live in proximity to water, near the water body or near the water source, or even inside the water body. They need some moisture. Okay. So habitat, you can write they are found mostly in moist areas, near water bodies. Full stop. They prefer hilly areas. I can also write slopes of hilly areas, barren rocks. Okay, rocks पर भी grow कर सकता है. Okay, rocks पर भी grow कर सकता है. Suppose this is the mountain. Suppose so on the slope of this mountain, you can have braphites growing on the slope of the mountains. Okay, so braphites can grow here as well. So braphites can grow on the slope of mountains also. So slopes of mountain एक और habitat. But the most important thing is they need some moisture to grow. Okay, this is the most important thing. Moist areas. If I say next point. Please draw this first. Okay, done. Next point is if I say that vascular tissues. We have discussed this in the last class that vascular tissues are absent in case of both thallophytes and in case of braphites. So they are absent in case of both thallophytes and braphites, but they are present in the next step, that is pteridophytes. Okay, so in these two, vascular tissues are absent, so I can write absent. Okay, so they don't have vascular tissues. Now think about this condition. Suppose there's a tree here and there's a braphyte like this. Braphyte का size छोटा सा होता है. Okay, look like this, and this is a tree which is enormous. If I compare this tree with moss, tree का size बहुत बड़ा है. Moss or braphyte, I will write braphites. Okay, now braphites दो तरह का होता है. I will discuss this. So look, braphites are two types, moss and liverworts. और भी होता है, but according to our syllabus, these two are the different types of braphites. Okay, now इसका size देखो, इसका size देखो. There is a vast difference between the size, right? Size का differences बहुत ज़्यादा है. So, if I want to conduct water to this part, let's say to the leaf which is present here,
I want to conduct the water to this part. I need a well advanced vascular system which will conduct water from this part, that is the root. यहाँ पे roots है, okay, from the roots to this part, from here to here, यहाँ से यहाँ तक. So I need a very good vascular tissue system which is xylem and phloem, right? So normally water conduction के लिए we need only xylem. So this is called vascular tissue system. Now it is present in case of trees because this tree has a vast structure, okay, and it's quite big. So you need to transfer the materials from one place to another place, okay, and that should be done efficiently. That's why vascular tissues are well developed in this case. Okay. But if you compare this with bryophyte का size बहुत छोटा होता है. Okay. It doesn't need this kind of transport system, and that's why xylem and phloem, that is vascular tissues, they are absent. Okay, है ना. अब मुझे कोलकाता से हावड़ा जाना है तो तुम्हें प्लेन या फ्लाइट की जरूरत तो नहीं पड़ेगी. बस, टैक्सी, ऑटो, बहुत सारे अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बट यू डोंट नीड अ फ्लाइट, राइट? सिमिलरली इन केस ऑफ bryophytes इसका जरूरत नहीं पड़ता, and that's why it is absent. Okay, so I can say vascular tissue is absent because of the small size of bryophyte, and there are other factors as well, but that is not required. Because of small size of bryophytes, okay, and is less evolved. Also, it is bryophytes are less evolved. Evolution बहुत कम हुआ है, ठीक है? Okay, please copy करो. Next point लिखेंगे. Next point is that bryophytes prevent soil erosion. They prevent soil erosion. Okay, you can simply write prevents soil erosion. And I hope that you know about soil erosion. Now, soil erosion क्या होता है? Soil erosion means, let's say this is the example of a slope, right? And यहाँ से बारिश हो रही है. So let me erase this part. I'm erasing this part. Copy नहीं किया तो कर लो. Suppose बारिश हो रही, rainfall. Rain is pelting down the slopes, and because of this high velocity of the running water, what will happen? This running water will move in this direction, and it will try to take the soil particles which are present here with it, right? It will try to take the soil particles with it. Let's imagine the condition in which there was no bryophyte present, right? So let me draw a second diagram here. This is another slope, and there is no bryophyte in this case. Okay, there is no bryophyte on the slope. It is free of bryophytes. So the rain will fall on the slope, and it will try to move in this direction. Okay, so when it will move with high velocity, what will happen? It will take the soil particles or the rock particles which are present on the slope along with it. So जब ये move करता है, it moves with the soil particles. Okay, जब ये move कर रहा होता है, उसी process को हम लोग क्या बोलते हैं? So I can write water plus soil particles. They will move away from the slope. ठीक है? This process is called erosion. The process of taking away the soil particles or the rock particles from the slopes of mountain, or even the ground water जो move करता है, उसमें भी बहुत सारे particles present है. So these are the parts of geography. I hope तुमको पता होगा erosion क्या होता है. तो erosion क्या है? Just erode करना upper surface का जो layer है, the running water will take that layer with itself, and over a period of time what will happen? This layer or this length or this width will decrease. Okay, ये छोटा होता जाएगा, ये पतला होता जाएगा. This will take millions of years. Okay, ये एक बार में नहीं होगा कि आज जनवरी में बारिश हुई, फिर मार्च में बारिश हुई, उसमें फिर सारा का सारा उड़ गया, ऐसा होता नहीं है ना. It will take thousands and millions of years, right? Millions of years लगता है. तो हमारे अर्थ पे बहुत सारे ऐसे रॉक्स है जो बहुत पुराना है, thousands of years पुराना. तो erosion होता है लगातार, and there are different types of rocks वो सब पड़े होंगे. That is not required here. The thing that is important is bryophyte. If they are present on the surface, they will prevent this
erosion. Okay, soil particles का contact water के साथ नहीं होगा, and the water will move through the bryophyte. It will not come in contact with the soil particles. As a result, erosion is prevented. Okay, तो second point ये हमारा ये वाला point, it prevents soil erosion. Okay, बस ये याद रखो. Next आगे बढ़ते हैं. इससे क्या फायदा होगा? What is the importance of this prevention? So it will help in retention of soil fertility. It will help in retention of soil fertility. Okay, soil का fertility बढ़ा के रखेगा, because minerals are not lost. If there is erosion, apart from the soil, minerals are also lost. Okay, so that is not done in case of this. अगर bryophyte present है तो erosion नहीं होगा, simple बात है, and that will help in retention of soil fertility. Okay, one more thing, just similar to this, but याद रखना यहाँ पे क्या होता है. First ये लिख लो, cryptogamous. So I have explained this term cryptogamous, that is hidden reproductive structures. If the reproductive structures are hidden, they are not exposed, like in case of algae. Okay, they are exposed. In case of mango, they are exposed. Okay, they are hidden in case of algae. Okay, similarly in case of bryophytes also they are hidden. So that property is called cryptogamous property. So those plants are called cryptogamous plants, in which reproductive structures are hidden. So इसको we have discussed in the first lecture, वहाँ पे अच्छे से कर चुके हैं. If you have not watched the first lecture, पहले उसको देखो, उसके बाद इसको देखना. Okay, reproductive structures are hidden. That property is called cryptogamous. Okay. Second thing is, let me erase this first. Examples की बात करेंगे. First copy this part. There is a question in NEET जो bryophyta के ऊपर आया था, and this is a common topic in both class 11 and class 12. Class 12 में you have a chapter on ecology, in which we will discuss the succession types. That is not required at the moment. Just need to understand कि succession क्या होता है वो समझ लो. देखो क्या होता है कि suppose there is a forest over here. This is a forest, right? ये forest है, यहाँ पे बहुत सारे पेड़, like Amazon rainforest suppose. Okay, but once upon a time this forest was a barren land full of rocks. सिर्फ और सिर्फ पत्थर थे वहाँ पर. There was no soil at all. Okay, and if there is no soil, there should be no plant growth. Okay, तो क्या होता है? This process is called succession. Okay, and bryophytes, they help in succession. How do they help? Let's see. So initially this condition was like this. ये rocks, barren land of full of rocks थे, and ये हमारा final condition है. This is the final condition. Okay. Now there's an organism called moss. Now I told you that bryophytes are of two types: mosses, moss, and the second type is liverwort. Okay, so I can write mosses or I can also write bryophytes. We are seeing. Okay, bryophytes का एक type है moss, example है moss. Okay, तो mosses, they first colonize. Mosses colonize the bare rocks, and initiate their breakdown. Rocks को ये break down करेगा. कौन? Mosses. Mosses क्या है? Example of bryophytes. Okay, so they are the first organisms that colonize a rock or an area which is full of rock. Okay, rock से भरा हुआ एरिया को colonize करने वाला जो first organism है. Okay, first organism to colonize rocks. And जब ये colonize करेगा वहाँ पर, so it will initiate the breakdown of rocks. Now, what will happen when the rocks will break? तो rocks का breakdown होगा.
या रॉक ब्रेक्स कर लो, रॉक ब्रेक्स इनटू स्मॉल न्यूमरस fragments, which is nothing but soil. The small numerous fragments of rocks, they will ultimately form the soil. Okay, now soil will accumulate over a period of time. ठीक है, बाइंडिंग होगा सॉइल का, बहुत सारा प्रोसेस है ज्योग्राफी में, वो हमारे काम का नहीं है. जस्ट याद रखो सीक्वेंस को, ब्रेक डाउन हुआ, सॉइल बना, एक्युमुलेशन हुआ, एंड दिस सॉइल can host a number of bacteria. This soil is preferable for the growth of a number of bacteria. Number of bacteria can grow here. तो अब बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है. प्लीज रिमेंबर दिस टर्म कि accumulation होने के बाद ही बैक्टीरियल ग्रोथ होगा. बैक्टीरिया कैन ओनली ग्रो इन सॉइल. ओके, most of the bacteria they cannot grow in rocks. So once the process of decomposition or breakdown of rocks is completed, after then only क्या होगा, bacteria can start their growth. Okay, the first organism यहाँ पे जो है हमारे पास वो क्या है? First organism to colonize rocks, they are bryophytes or mosses. Okay, hence they are called pioneer species. Hence they are called pioneer species. Pioneer means जब पहले आया, first यहाँ पे ग्रो किया, that is pioneer species. Okay, बस यही है. So what will happen next? देखो फर्स्ट क्या हुआ, फर्स्ट मॉस का ग्रोथ हुआ. मॉस का ग्रोथ वाज सक्सीडेड बाय द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. तो सेकंड स्पीशी कौन है? सेकंड स्पीशी इज बैक्टीरिया, अ नंबर ऑफ बैक्टीरिया, सेकंड स्पीशी. ओके, आफ्टर दिस स्मॉल हर्ब्स विल ग्रो. ठीक है, स्मॉल हर्ब्स के बाद से वीड्स भी ग्रो कर सकता है. वीड्स, स्मॉल हर्ब्स और वीड्स दे विल ग्रो. देन श्रब्स का ग्रोथ होगा. ठीक है, देन ट्रीज का ग्रोथ होगा. The number of trees will grow together and then ultimately ये condition will be reached. Okay, this is the final condition. So I can say ये जो process चल रहा है one after another, successive जो हो रहा है लगातार एक के बाद, this is called succession. Okay, this complete process is called succession of plants in a particular area, and the first organism that starts this succession process, that is called pioneer species, which is in this case mosses. Okay, mosses are examples of pioneer species. ये important चीज है. Okay, please copy this part. Okay, चलो. Write down the examples of bryophytes. First example moss, second example liverwort. First example moss, second example liverwort. Okay, and then give the heading structure of bryophytes. Structure of bryophytes. Okay, structure of bryophytes. Please start. The structure of bryophyte is erect. The structure of bryophyte is erect. The structure of bryophyte is erect with unicellular or multicellular root-like structures. Root-like structures, not roots. Root-like structure. Root के जैसा है, root नहीं है. Root-like structures called rhizoids. Root-like structures called rhizoids. Okay, they help. Root-like structure तो क्या help करेगा? जो root का function है वही वाला function इसका भी होगा. So root का function क्या होता है? Absorption of water and minerals, and second thing is to hold the plant in that soil or in that area. Okay, so I can write rhizoid. इसका function लिख लो. First function is absorption of water and minerals, and second function is to hold.
to hold the plant. Plant in this case is moss or bryophyte. You can also have bryophyte here. moss मतलब bryophyte. Although बहुत छोटा plant होता है, bryophytes. To hold the plant or the bryophytes to the substratum. What is substratum? Substratum is the soil. Okay, the soil is called substratum. Substratum के साथ hold करने का जो function है, that is a function of rhizoids. Okay. Next thing. Next thing I can write. There are. Yeah, you can write true roots. True roots. True leaves. True stem are absent in bryophytes. Obviously, they are absent. Okay, they are absent. So, अगर मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, कुछ एक रफ टाइप का स्ट्रक्चर है इस तरह से, ठीक है? तो at the base of this structure, these rhizoids are present. Okay, at the base of the structure, rhizoids are present. और ये कुछ इस तरह का दिखता है. So you can refer the NCERT diagram. मैं शेयर कर दूंगा PDF. NCERT में वो डायग्राम को चेक कर लेना. इस तरह का होता है. Okay. So I can write this is the rhizoid. हो गया, इसको ड्रॉ कर लो. Next, please draw this first. Next, we'll talk about the reproduction in bryophytes. Okay, so please give the heading reproduction in bryophytes. Reproduction in bryophytes. And make 2 branches. Reproduction in bryophytes, make 2 branches. First branch पे लिख लो. Reproduction in bryophytes, the first branch, asexual reproduction. Asexual reproduction. The second is sexual reproduction. Now, asexual reproduction is again of 2 types. Now, what is asexual? What is sexual? Normally, asexual means without the formation of gametes. And if there are formation of gametes, या gametes का formation हो रहा है, that is sexual. Okay. So, asexual reproduction में 2 तरह का types हो गया. Let's see क्या क्या. The first type is fragmentation. This is fragmentation. Second is spore formation or sporulation. Sporulation or spore formation. Sporulation. Okay. Fragmentation and spore formation. Now, sexual reproduction occurs with the help of gametophytes. Occurs with the help of structures called. I will explain the structure. The structure is called gametophyte. Gametophytes. Occurs with the help of structures called gametophytes. Now, gametophytes produce gametes. What are gametophytes? These are structures that produce gametes. Gametophytes produce gametes. Okay. याद रखना, gametophytes are haploid. Haploid means they have one set of chromosome. N. N means one set of chromosome. Haploid. Okay. If I say diploid, that means they have 2 sets of chromosome. So gametophytes are not diploid. They are haploid. Okay. And gametes, once again, gametes are also haploid. Okay. अब इसको समझना होगा. So इसको ह्यूमंस के रेस्पेक्ट में समझते हैं, वो इजी होगा तुम्हारे लिए. तो इसको मैं अलग से यहाँ साइड में दे रहा हूँ. इसको कहीं साइड में लिखना. जैसे मैं यहाँ साइड यहाँ पे लिखा हूँ. चलो साइड में, ठीक है. एंड डोंट इंटरमिक्स दीज 2 थिंग्स. मैं जस्ट एक रिलेट कर रहा हूँ. Okay, so that you get an understanding what is gametophyte. Let's see. In case of humans, humans may, if I say testis, okay, testis, they produce sperm. Testis produce sperm. Now, the ploidy number, that is haploid or diploid case जो होता है, that is called ploidy number. Sperms are always haploid, right? I hope तुमको पता हो sperms क्या होते हैं, haploid. But testis is diploid. Okay, testis is diploid.
In case of testis there are some cells. मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ यहाँ पर. टेस्टिस में जो सेल्स होते हैं they are called spermatogonia. Okay, spermatogonia. They produce sperm, and once again this spermatogonia is diploid in number, whereas the sperm is haploid in number. Okay, now recall that cell division wala part, right? So cell division दो तरह का होता है. It is of two types. The first type is mitosis and second type is meiosis. Okay, mitosis means equal type of division, and meiosis means reduction type of division. Okay, so 2n to n is one kind of division where you can see ये देखो 2n से क्या हो रहा है, n हो रहा है. Okay, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया reductional division, right? Second type is if I say 2n to 2n, let's suppose 2n to 2n, and if I again say n to n. So in these two cases what you can see is that the chromosome number remains same. 2n से 2n, n से n, they are same, right? So I can say that this is kind of equational division, right? Equational division. This is reductional division, second is equational division. Okay, so यहाँ पर reduction division हो रहा है, and I can say this is meiosis, while this part is called mitosis. I hope this is clear. Meiosis and mitosis. And when you study the cell division part, हम लोग इसको अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में अच्छे से कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं meiosis के अंदर. अभी के लिए बस इतना याद रखना काफी है. Okay, now let's come back to this part. Spermatogonia to sperm, 2n to n, right? And in this case देखो n to n. Now you can figure out कि कौन सा क्या है. When I say 2n to n, this is reduction division or meiosis. So in case of human beings, gametes are produced by meiosis. Okay, and in case of plants, like not all plants, in case of this plant which is bryophyte, in case of bryophytes, not all plants, बाकी प्लांट तो डिफरेंट होता है, याद रखना. ब्रायोफाइट में ऐसा हो रहा है. इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स देखो gametes are produced by n to n. n to n means this part. Consider this part, n to n, n से n. So this is mitosis. Okay, mitosis. So that is important. यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो gametes का formation हो रहा है, that occurs with the help of a process called mitosis. But in case of human beings, it occurs with the help of a process called meiosis. So they are different things, right? So मैंने एक relation दिया तुमको, बस समझ में आया होगा. तो ये sexual reproduction occurs with the help of mitosis. देखो याद रखना, it is not always true कि sexual reproduction meiosis से होगा. It is also possible that sexual reproduction can take place with the help of mitosis and not meiosis all the time. But in most of the cases, ऐसा ही होता है, meiosis. But in some cases, mitosis भी होता है. Sexual reproduction, okay? Gametes can be produced with the help of mitosis as well. Okay, please copy this part first. Okay, so let's come back. So let me erase this part. I will concentrate on this part. मैं इसको पूरा मिटा रहा हूँ. So please give the heading sexual reproduction. अलग से एक बार. Sexual reproduction in bryophytes. Sexual reproduction in bryophytes. Sexual reproduction in bryophytes. Sexual reproduction in bryophytes में we can write. It will start with the first part. Gametophytes, and we know that the ploidy level of gametophyte is haploid, N. Okay, this gametophyte will undergo mitotic division, mitosis,
to form gametes. Okay, now gametes are n. Okay, gametophytes भी n, gamete भी n, जो पीछे हम लोग पढ़े थे वही है. Now gametes are again of two types. So I can classify the gametes into two types. One is the male gamete, second is the female gamete. One more thing. The male sex organs. इसको साइड में लिखना. Male sex organs भी दो टाइप का है. Obviously, the male sex organ and the female sex organ. The male sex organ is called antheridium. Antheridium. The male sex organ is called antheridium, and the female sex organ is called. I don't have space here, so I will write it here. Archegonium. Okay. Male sex organ is called antheridium, while the female sex organ is called archegonium. Okay. Now similarly, the male gamete in this case, it is called, उसका नाम क्या है? Antheridium. But gamete का नाम, this is the name of sex organ, that is antheridium. The male gamete is called antherozoid. Okay. You have to memorize the terms. This is antheridium and this is antherozoid. They are different. This is the male sex organ. This is the male gamete. Okay. Now this female gamete. A female sex organ is called archegonium, but the female gamete is called egg. It is called egg. Okay. Now these two are released in water. These two are released in water. These two are released in water. Okay. And inside the water they will fuse. So fertilization होगा. Fertilization occurs inside water. Fertilization occurs inside water, and that's why bryophytes are also called amphibians of plant kingdom, because water का essential requirement है यहाँ पे. Okay, so release in water and then they will fuse together to form zygote. Okay, now this zygote is obviously 2n. Now you can see the gametes are n. That is ये वाला क्या part है? This is n. This is n. n and n fuse करेगा. n square तो बनेगा नहीं. 2n बनेगा ना. n और n 2n बनेगा. Right? Now this zygote will further divide. This zygote will divide to form a structure called. This zygote will mature or it will divide to form a structure which is called sporophyte, which is again 2n. ठीक है? तो n2n दो ही टाइप्स होते हैं. n2n 3n कहीं कहीं होता है. जहाँ भी होगा I will teach you कि कहाँ पे होता है. टेंशन नहीं लेना, बस याद रखो n और 2n कहाँ कहाँ होता है. तो n and 2n. Zygote will form sporophyte. Okay, now this sporophyte will germinate. It will undergo reduction division first. So this sporophyte will undergo, I will write reduction division RD. Reduction division RD. Okay, short form है reduction division. It is also called meiosis. Okay, so हमने क्या पढ़ा था meiosis में? देखो 2n to n. सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है. अब ये सेम हो रहा है यहाँ. गैमेट का प्रोडक्शन के लिए माइटोसिस हो रहा था, but sporophyte will undergo meiosis this time. Gametes are not formed in this case. So what will be formed? Spores will be formed. So I will write spores. And since meiosis is taking place, that means the chromosome number will get reduced to half, and this will become half, that is n. Okay, so spores are produced. So what will happen in the next step? These spores will germinate. So I don't have space, so I will write here. So these spores will germinate. Germination of spores. The spores will germinate to form structures called sporophytes. Sporophytes, which are again n. Okay, which are again n. Oh, sorry, gametophyte. My bad. Please excuse me. Here are sporophyte. Spores बना. Sporophytes से spore बना, and spore will form gametophyte. Okay. So zygote, sporophyte, spores, gametophytes.
and we have discussed this thing that gametophytes जो होते they produce gametes. So this cycle will repeat और gametophytes will again form. I can say ये फिर से repeat हो रहा है, ये एक cycle बन गया ना. This cycle is nothing but it is the life cycle of bryophyte. This is the life cycle of bryophyte. So एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है, अभी याद हो जाएगा तुम लोगों को क्लास में. Let's see. देखो, initially the first step is gametophyte का formation. Gametophytes are structures that will produce gametes. Now gametophytes, they have a chromosome number of n. That is, they have chromosome set n. N means haploid. So gametophytes are haploid. Now this haploid will produce another haploid, right? Haploid to haploid. N to n. N say n. N to n is produced by mitosis. That means gametophyte will form gametes by mitosis. By mitosis. Okay? Now this gamete is of two types. First type is the male gamete, okay, which is called antherozoid, and it is produced by male sex organ, which is antheridium. Okay. Similarly, the female gamete is called egg, and it is produced by archegonium, female sex organ archegonium. Now these two gametes, antherozoid and egg, they will fuse together. That fusion will take place outside the body of bryophyte. Okay. It takes place outside the body, and it is taking place inside water. They are released in water, and they will fuse together in water, and that fusion is called fertilization, and they will produce a structure called zygote. Now this zygote is obviously twin because n और n का fusion से बना है. This zygote will divide to form, it will mature, it will divide rapidly to form a multicellular structure called sporophyte. बहुत सारे structures zygote से बन रहा है. Okay. Zygote से sporophyte बना, sporophyte, and since zygote was twin, तो यहाँ पे भी क्या है, twin. मतलब यहाँ पे कौन सा division हो रहा है? This type of division is called mitosis. Okay, a number of cells are produced by division, cell division, and that is called mitosis because the chromosome number remains same, 2 and 2n. Okay, 2 and 2n. Okay, so zygote will form sporophytes, and sporophytes. What are sporophytes? Just as in case of gametophytes. What are gametophytes? Gametophytes are structures that produce gametes. Okay, we can see gametophytes are structures that produce gametes. Similarly, sporophytes are structures that produce spores. Okay, sporophytes are structures that produce spores, but this time you can see you are producing n from 2n. Okay, 2n say n. The chromosome number is getting reduced to half, and that's why the process that is taking place here is meiosis. Now this meiosis will produce spores. Now spores will germinate. They will germinate to form, they will grow, and they will form structures called gametophytes. Spores say gametophytes, and these gametophytes will again form gametes, and the cycle will repeat. So this is a complete life cycle of bryophyte. अब इसका एक ट्रिक है, एक बार इसको कॉपी करो, मैं कुछ लिखूं. प्लीज कॉपी दिस पार्ट फर्स्ट. All right. So we try it. चलो यहाँ पे लिखते हैं या एक ट्रिक है मेरे पास. जरा सा स्पोर्टी गेम है ब्रायोफाइट, या ऐसा मतलब कि ऐसे कर लो, जरा सा स्पोर्टी गेम है ब्रदर का, आई कैन ऑल्सो राइट भाई का, ब्रदर का और भाई का. ओके, अब ये क्या है, लेट्स सी, इसको साइड में कर लो. लेट्स सी, फर्स्ट मुझे एक लाइफ साइकिल साइक्लिकल फॉर्म में लिखना है ऐसे, ठीक है.
So in cyclical form, I will always start with zygote. You can start from any point because circle में तो कहीं से भी start करें equal बात है. But I prefer to start from zygote. Okay, because में confusion कम होता है. So I will start with zygote और मैं यहाँ लिखूँ zygote चलो. मैंने यहाँ लिखा zygote. Okay, this is 12. Next thing, you have to draw this in your exams. ऐसे तो समझने के लिए था, लिखने के लिए एग्जाम में साइकिल बनाना पड़ता है, तब मार्क्स अच्छा मिलता है. Okay, now zygote will form sporophyte. So next part is sporophyte. Okay, now this sporophyte will form spores. Okay, next this spore will form gametophyte. This spore will form gametophyte, and the gametophyte again form gametes. They form gametes. The gametes, they again fuse to form zygote. So if I complete this cycle, ऐसे मैं मूव कर रहा हूँ कुछ इस तरह से. Okay, so this is the complete life cycle of bryophyte. Now look at this. जरा सा स्पोर्टी गेम है ब्रदर का या फिर भाई का या ब्रायोफाइटा का, जो लिखना लिखो. तो जरा मीन्स दिस इज जरा. zygote, so this is zygote. जरा सा sporophyte, this is sporophyte. ठीक है, sporophyte. Sporty, spores. Next जरा सा sporty game, gametophyte है. अब gametophyte से क्या प्रोड्यूस होगा? गैमेट प्रोड्यूस होगा, तो zygote. ठीक है, तो zygotes कहाँ से बना? वापस से साइकिल रिपीट होगा. दैट मीन्स जरा सा स्पोर्टी गेम है ब्रदर का या भाई का ब्रदर का मतलब ब्रायोफाइटा. ये ट्रिक है विद द हेल्प ऑफ विच तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा. तो जरा zygote सा sporophyte, sporty spores, game gametophyte, and gametophyte will produce gametes. ये लाइफ साइकिल किसका है? भाई का. भाई मतलब ब्रायोफाइटा. ओके, दैट्स इट. वन मोर थिंग, इफ यू आर कंफ्यूज्ड कि दिस इज आल्सो एस, दिस इज आल्सो एस, तो कौन सा एस पहले है? स्पोरोफाइट पहले है कि स्पोर पहले? तो याद रखो, spores are produced from sporophytes because sporophytes क्या है? They are structures that produce spores. Okay, similarly gametes are produced from gametophytes. मतलब gametophytes are structures that produce gametes. Similarly sporophytes are structures that produce spores. ठीक है, बस सिंपल बात है. So please copy these two parts, this and this, and with this ये part यहाँ पे life cycle यहाँ complete हुआ. We'll talk about the different types of bryophyta next, that is mosses and liverworts. उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, फिर ये bryophyta complete होगा. Please copy करो. चलो कॉपी हो गया. ओके, प्लीज गिव द हेडिंग. मॉसेस या फर्स्ट लिवरवर्ट करते. चलो लिवरवर्ट. प्लीज गिव द हेडिंग लिवरवर्ट. नंबर 1. थ्योरेटिकल पार्ट है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. habitat, moist shady habitat. Just write it down. Moist shady habitat. Next thing, plant body is thallus like. Plant body is thallus like. Thallus के जैसा है, जैसे thallophyta में था. It is thallus like. Exactly thallus नहीं है. It is thallus like or thalloid. Plant body is thallus like or thalloid. Examples include MRP. ये इसका ट्रिक है MRP एग्जाम्पल का. एग्जाम्पल ऑफ लिवर. तो ऐसे याद करो, लिवर का MRP. ठीक है, MRP क्या है? तो इसके लिए लिख लो. फर्स्ट वन मर्केंटिया और मर्शेंटिया. एक्चुअली मर्शेंटिया बोलते हैं, बट इंग्लिश में मर्केंटिया बोलेंगे. ओके, मर्केंटिया. नेक्स्ट रिक्शिया.
Rixia, and last one is Porella. Porella, MRP. Okay, Mercantia, Rixia and Porella. So here is an example of a liverwort. Next, there are two different types of liverwort. Next point, लिख लो. There are two different types of liverwort. There are two different types of liverworts. There are two different types of liverworts. Number one, leafy, L-E. Number one, leafy liverwort. Number one, leafy liverwort. Number two, thallose liverwort. Okay, thallose liverwort. तो लीफी लिवरवर्ट एंड थैलोस लिवरवर्ट क्या होता है? सो अगर लिवरवर्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, इफ इट लुक्स लाइक दिस, देन इट इज कॉल्ड लीफी लिवरवर्ट. ओके, सो ये नंबर वन. एंड थैलोस अगर है, दैट मींस इट इज विदाउट, द बॉडी इज विदाउट एनी काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन. ठीक है, काइंड ऑफ दिस, मतलब कि थैलस लाइक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, thallus like LBSR. Okay, so ये हुआ हमारा types. Next next type, please copy this part. We'll discuss the asexual reproduction next. So नीचे लिखो, asexual reproduction occurs. Give the heading asexual reproduction and then write. Give the heading asexual reproduction and then write. Asexual reproduction occurs. Asexual reproduction occurs in the form of fragmentation. In the form of fragmentation of thalli. Okay, of thalli or thalli. Thalli or thalli. Okay, just a minute. Yes. So fragmentation of thalli. So हम लोग क्या बात करते हैं? Asexual reproduction हो गया. So fragmentation of thalli. Thalli means if this is the body, suppose this is the body, and if it breaks into say 1, 2, 3 fragments. Okay. So if you break it into 3 parts, I'll get 1, 2, 3, 4. These 4 parts will be produced. 4 fragments. So if you break it thrice, you will get 4 fragments. कितना बार ब्रेक करोगे उससे एक ज़्यादा फ्रैगमेंट मिलता है. ये है हमारा फ्रैगमेंटेशन करना. सिंपल बात है. फ्रैगमेंटेशन में ऐसा होता है. ठीक है, एग्जाम्पल इसका याद रखो कि फ्रैगमेंटेशन कहाँ होता है. सो फ्रैगमेंटेशन अकर्स इन केस ऑफ रिक्सिया. ओके, सेकेंड थिंग, या तो ऐसे होगा asexual reproduction number 1, और सेकेंड पॉइंट लिखो, asexual reproduction can also take place with the help of. Asexual reproduction can also take place with the help of. Asexual reproduction can also take place with the help of. With the help of. With the help of. Gamete formation. Gamete formation. With the help of gamete formation. Okay? Or gamete formation. तो gamete formation क्या होता है? Let's understand this. Let's see कैसे होता है. So please write a few points. Gamete are green multicellular, green multicellular asexual buds, present or located on structures called gamma cups. Present on or located on structures called gamma cups, which are again located on, मतलब कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? gamma cups की बात कर रहा हूँ. which are again located on thalli or thallus. Which are again located on thallus or thalli.
थलाई कर लो, सिंगल थलाई, ओके, सिंगल आई भी लिख सकते हो, एक ही बात. So in general, if I talk about this complete structure thalli, this is the thalli, right? The complete body, this is called thalli. So if you look at this thalli, on the surface of this thalli, some cup shaped structures are present, which are called Gemi cup, okay? And inside these cup shaped structures, green multicellular asexual buds are present, which are called Gemi. तो ये इसका पूरा सीक्वेंस हो गया. थैलाई, थैलाई के अंदर गेमी कप के अंदर गेमी प्रेजेंट, ओके. एंड गेमी कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है. गेमी इज ग्रीन, इट इज एसेक्सुअल एंड इट इज मल्टीसेलुलर, ठीक है. गेमी गैम ऐसे याद कर लो, ठीक. गेमी गैम, ओके. कॉपी करो. और एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा मैं नेक्स्ट, जिससे तुमको आइडिया हो जाएगा. Please copy this part first. Some structures like this are present here. Just this. Now I can see that this is the thallus. Okay, ये thallus है. And ये जो structure present thallus के ऊपर, this is called Gemma cup or Gemi cup. Cup shaped structure, okay. And inside this Gemi cup, green asexual multicellular Gemi are present. ये हो गया हमारा कंप्लीट सीक्वेंस. इसको भी ड्रॉ करो. ओके. नेक्स्ट पार्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है. इट इज सिमिलर टू ब्रायोफाइट जो हमने पढ़ा था. तो वहां लिख लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिमिलर टू ब्रायोफाइट्स, मतलब जरा सा स्पोर्टी गेम है भाई का, ओके. जाइगोट, स्पोरोफाइट, स्पोर्स, गैमेटोफाइट, गैमेट्स, जाइगोट, पूरा सीक्वेंस. इट इज सेम एज ब्रायोफाइट बिकॉज हम लोग उसका ही पार्ट पढ़ रहे हैं. बट इफ वी स्टडी द मॉसेस, वहां पर थोड़ा डिफरेंस मिलेगा. कैसे मिलेगा हम देखेंगे हम लोग. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट मी इरेज दिस पार्ट फर्स्ट. One more thing you can write, make a note and write that gametophyte is the dominant phase. Gametophyte is the dominant phase of the life cycle of bryophytes. Gametophyte is the dominant phase of the life cycle of bryophytes. Okay, just as the previous case, like in case of thallophytes, the dominant stage was मेरा लिख देखो हमने पीछे पढ़ा था थैलोफाइट्स, और ये क्या है हमारा ब्रायोफाइट्स. रिवाइंड योर नोट्स. फर्स्ट क्लास का थर्ड पेज और सेकंड पेज पे चले जाओ. वहाँ पे क्लासिफिकेशन होगा प्लांट किंगडम का, ओके, विथ वैस्कुलर टिश्यू. फर्स्ट क्लासिफिकेशन था विदाउट बॉडी डिफरेंशिएशन, विथ बॉडी डिफरेंशिएशन. विथ बॉडी डिफरेंशिएशन में दो पार्ट्स हो गया, विदाउट वैस्कुलर टिश्यू, विथ वैस्कुलर टिश्यू. विदाउट वैस्कुलर टिश्यू में ब्रायोफाइट आया हुआ था, ठीक है. सो दीज टू दे डोंट हैव vascular tissues, right? So those plants that lack vascular tissue, in those plants gametophytes are the dominant phase of life cycle. अब ये क्या है, इसके लिए need to learn about alternation of generation, okay, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. बट मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं ताकि तुमको ये याद हो जाए. We'll discuss alternation of generation in the next class. But before that, let me tell you कि gametophytes dominant क्यों है. Dominant means क्या होता है. First copy this part. इसको erase करें. Pause the video and copy this part. चलो. जैसे if I say that suppose ये है हमारा प्यारा सा मिस्टर एक्स, ओके. बचपन में मिस्टर एक्स ऐसा था,
ठीक, और अभी ऐसा है, आगे जाकर बुढ़ा हो जाएगा, बाल उड़ गए इसके, टकला हो गया, ठीक है, ये ओल्ड एज है इसका, ओल्ड एज। ये अभी ये इसका इन्फेंट, चलो ये बचपन का एज है, ठीक है, और ये यंग एज है इसका, चाइल्ड लिख लो, चाइल्ड स्टेज, यंग स्टेज और ओल्ड स्टेज। ओके, तो जैसे कि 1 to 14 ईयर्स तक में बोले हुए ये चाइल्ड है, ठीक है, 14 ईयर्स भी चाइल्ड नहीं है, चलो ठीक है, ओके। से गवर्नमेंटल रिकॉर्ड्स के लिए 1 to 18 ईयर्स, बिलो 18 प्लस, ओके, तो ये 18 से लेकर चलो 18 to 60 गवर्नमेंट वाला डेटा यूज कर रहे हो लोग, तो 60 प्लस ओल्ड एज मांगते हैं, चलो ओके। तो जो हमारा मेजर पार्ट है लाइफ साइकिल का, ठीक है, मेजर पार्ट वो ये वाला पार्ट है, मेजर पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट। तो आई कैन राइट दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल। मेजर पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल कौन सा है, यंग एज। And this major part of the life cycle of any organism, in this case we are talking about the human beings, right? But if it is for any organism, the major part of the life cycle is called the dominant stage, the dominant phase. So in case of humans, the dominant phase is the young age, okay. And in case of मैं अगर thallophytes and bryophytes की बात करूँ, तो in this case gametophytes are the dominant phase। ये क्या हो रहा है, समझ में आएगा। तो ये समझ में आ गया कि मेजर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमिनेंट फेज। अब नेक्स्ट पार्ट पे आओ धीरे धीरे करके। नेक्स्ट पार्ट, इफ यू रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट, तो तुम्हें क्या मिला था, जरा सा जाइगोट, फिर क्या मिला था, जरा सा स्पोरोफाइट, फिर क्या मिला था, स्पोर्स, जरा सा स्पोर्टी गेम, फिर क्या मिला, गैमेटोफाइट्स, और फिर क्या मिला, gametes. These gametes used to form zygote again, right? So you can clearly see that the life cycle involves both sporophyte and gametophytes. So there are two different types of structures in case of plants. Animals में as such कोई structure नहीं होता, okay? Plants के case में there are two different types of structures. One structure is called gametophyte, second structure is called sporophyte. Okay, like in case of the higher plants, suppose example लूँ मैं mango का. So the plants which you see around you is its body is made up of sporophyte. But in case of this, that is bryophyte, the body is made up of gametophyte. तो ये चीज याद रखना। तो क्या होता है, body of, या ऐसे बोल लो adult body या जिसमें ये reproduce कर सकता है, that body of bryophyte, that body of bryophyte is made up of that body of bryophyte is made up of gametophyte. Okay, but in case of, मैं एक और केस देता हूँ यहाँ पर, in mango या banana, ओके, या banyan tree, कुछ लेना जो भी लेना, apple tree जो लेना तुम्हारा मन करे, तो in mango और higher plants में बोले चलो, higher plants which are more evolved than the bryophytes. So in that case the body is made up of sporophytes. So in this case ये है sporophyte और ये केस क्या है, gametophyte. So I can clearly say कि बॉडी जो है वो जिस चीज से बना है वही हमारा क्या होगा, डोमिनेंट फेज होगा, ठीक है। इसको अलग कर दो यहाँ पर, मेजर पार्ट एनिमल्स में सीन होता है, प्लांट में मेजर पार्ट सीन होता है, बट बॉडी किस चीज से बना होता है प्लांट का, मेनली बॉडी इज मेड अप ऑफ, या आई कैन से मेजर पार्ट के टर्म्स में समझ लो कि फिलहाल मेजर पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल इज कंपोज्ड ऑफ गैमेटोफाइट, ओके, एंड द माइनर पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ, इन केस ऑफ ब्रायोफाइट इज कंपोज्ड ऑफ स्पोरोफाइट, माइनर पार्ट। सो अब मैं आपको बोलूंगा दो पार्ट्स, तो लाइफ साइकिल के दो पार्ट्स हैं। लाइफ साइकिल के मेजर पार्ट में ये जो ब्रायोफाइट है, मेजर पार्ट में इट लिव्स एज अ गैमेटोफाइट, ओके। गैमेटोफाइट का प्लॉयडी लेवल क्या था, इट वाज
N. Okay, and minor part में it lives as 2N, that is sporophyte. मतलब अपने लाइफ का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है, जैसे कि इफ आई से ब्राफाइट का लाइफ स्पैन 1 ईयर सपोज, तो उसमें से 10 मंथ्स वो इस फेज में रह रहा है, इट लिव्स एज गैमेटोफाइट फॉर 10 मंथ्स एंड 2 मंथ्स वो इस फेज में रह रहा है. सो देयर आर 2 डिफरेंट पार्ट्स. ओके, ये एनिमल्स में नहीं होता, ये सिर्फ प्लांट्स में होता है. एनिमल्स में भी होता है बट ह्यूमंस में नहीं होता. ऐसा कर लो, ठीक है. ह्यूमंस में ऐसा कुछ नहीं होता कि आधा पार्ट हम लोग 2N स्टेज में रहेंगे और फिर N स्टेज में रहेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना ह्यूमंस में. बट इन केस ऑफ प्लांट्स दिस टेक्स प्लेस. एंड ये जो फिनोमेना है इन विच द प्लांट बॉडी ऑल्टरनेट्स बिटवीन वन फेज एंड अनदर फेज. ठीक है, वन फेज क्या है, स्पोरोफाइट, सेकेंड फेज यू कैन से गैमेटोफाइट, और वाइस वर्सा, व्हिचएवर यू लाइक. ओके, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के बीच जो ऑल्टरनेशन हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ओके, सो आई कैन से कि लाइफ साइकिल के 2 पार्ट्स हैं, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट. ओके, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, एंड दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. हम लोग इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. प्लांट बॉडी ऑल्टरनेट्स बिटवीन द 2. ओके, अच्छा, अब इसमें तुमको समझना होगा कि 2 फेज अगर तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास अगर 2 फेजेस हैं, सपोज यू हैव टेकन बोथ मैथ्स एंड बायो. ओके, सो अगर तुम मैथ्स तुमको अच्छा नहीं लगता, तुम बायो ज़्यादा पढ़ोगे ना, यू स्टडी बायो more than you study maths, right? You will devote more time to bio than maths, right? तो वैसे ही यहाँ भी 2 parts है, sporophyte and gametophyte. The plant will devote more time to sporophyte. अगर ऐसा होता है मान लो, तो इसका जो dominant phase होगा that will be sporophyte, and if the plant devotes more time to gametophyte, तो हो जाएगा क्या, उसका मेजर पार्ट गैमेटोफाइट. ठीक है, तो इस तरह से इसको प्लांट 2 पार्ट्स में घूमता है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसको बोलते हैं. ठीक, इतना इन्फॉर्मेशन अभी काफ़ी है, जो भी है इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा. प्लीज़ कॉपी करो, इफ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा हो वापस पीछे जाओ, फिर से देखो एक बार. ठीक है, अंदर एनसीईआरटी रीड करो, बुक रीड करो, सब क्लियर हो जाएगा. एंड फिर जो डाउट्स है आई विल क्लियर. कॉपी करो. Okay. So let's proceed next part. एक डायग्राम है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट की बात करें. स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट. Structure of sporophyte. So let me draw it first. कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है एंड इसके 3 पार्ट्स होते हैं. 3 पार्ट्स. Sporophyte, साइड में के लिख लो. The sporophyte has 3 parts. Sporophyte has 3 parts. First part is capsule, second is seta, and third is food. The sporophyte has 3 parts: capsule, seta, and food. So this is the first part, that is capsule. This is the second part, seta, and this is the third part, food. ये 3 parts है इसके पास. Now, starting from this till this, यहाँ से यहाँ तक, this is the complete sporophyte. एक प्लांट के अंदर 2 स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे, ठीक है, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट. Now this part is called गैमेटोफाइट. अब ध्यान देना, this is Mrs. X.
Okay, Mrs. X, and Mrs. X is pregnant. Mrs. X is pregnant. तो अब इसके बॉडी में दो इंडिविजुअल्स है ना, मतलब दो, एक मिसेस एक्स है और एक इसका बेबी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी बॉडी, इसकी यूट्रस के अंदर क्या है, बेबी एक्स। ओके, सो इसमें दो ऑर्गेनिज्म एक साथ है। सोचो ऐसे, वैसे ही यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म एक साथ है, एंड तुम देख सकते हो एक ऑर्गेनिज्म ये है, सेकेंड ऑर्गेनिज्म ये है। अभी मैंने क्या पढ़ा, द डोमिनेंट फेज इज गैमेटोफाइट, दैट मीन्स द प्लांट बॉडी of bryophyte exists in the form of gametophyte, but when this gametophyte will reproduce, recall that life cycle। फिर से मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना, zygote, जरा सा, sporophyte, spores, gametophyte। Now this is the body, this is the body of this bryophyte, right? ये body है bryophyte का, plant का body। Now this body will form gametes, and these gametes will fuse to form zygote। Okay, तो zygote जो है, it will produce sporophyte। Okay, so I can say, अगर मैं इस cycle को थोड़ा सा अच्छे से लिखूं, ध्यान देना, if I write gametophyte first, please concentrate, if I write gametophyte first, gametophyte will form gametes, the gametes will fuse to form zygote, and this zygote will ultimately fuse, it will ultimately produce sporophyte। ठीक है, तो I can say that gametophyte क्या है, parent है, it is a parent, and the sporophyte is its child। Okay, I can say that कि ये parent है, इसका child है। तो this parent को मैं compare करूँ, this is Mrs. X, and this child is बेबी एक्स, एंड देख सकते हैं बेबी एक्स कहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, सो वैसे ही सिमिलरली आई कैन सी कि गैमेटोफाइट इज द ओरिजिनल प्लांट एंड इट बेयर्स अ स्पोरोफाइट। तो इसके बॉडी के ऊपर होता है, अंदर नहीं होता, ऊपर होता है, इसमें से ग्रो कर रहा होता है एक और स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। सो ये जो प्लांट है वो बस इतना ही था, ठीक है। अब इसके ऊपर से एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, एंड दैट एक्स्ट्रा ग्रोथ इज अ स्पोरोफाइट। ओके, तो ये इसका क्या है, बेबी है, और ये इसकी मम्मा है, ठीक है, ये इसकी मदर है सपोज। तो इस तरह से होता है। ओके, वंस अगेन ड्रॉ करो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने, बिकॉज ये टर्म्स नए हैं ना, तो उस पर तुम्हें प्रॉब्लम हो हल्का फुल्का, बट अगर अच्छे से वीडियो देख रहे हो, बार बार अगर प्रॉब्लम है तो रिपीट करो, समझ में आ जाएगा, कुछ प्रॉब्लम का बात नहीं होगा इसमें। बट हाँ, कन्फ्यूजन हो जाता है, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कन्फ्यूजन होगा, तो अच्छे से देखना, और जो भी डाउट्स हो मुझे पूछ दो। चलो कॉपी करो। Okay, done. One more thing, that sporophyte is attached to, please write it down, लिखो। The sporophyte is attached to the sporophyte is attached to the gametophyte. The sporophyte is attached to the gametophyte. And why it is attached to the gametophyte? It is attached to the gametophyte because it needs some nutrition. Okay, now that nutrition will come from the parent, right? This is the parent. So this child will draw nutrition from the parent, है ना? So this child will draw nutrition from the parent, and that's why it is attached to the parent. But एक time ऐसा आएगा when the child will grow and it will not need further nutrition, right? उसको और nutrition का जरूरत नहीं है. So at that point of time, it will detach itself from the parent. तो यहाँ से ये detach जाएगा इस तरह से, and this will form a new plant. ये एक नया plant बना लेगा, ठीक है? बस इस तरह से होता है. तो जो न्यू प्लांट बनेगा, दिस स्पोरोफाइट जब ये ग्रो कर जाएगा ना, तो ये स्पोरोफाइट अगेन ग्रो करके क्या बनता है, इट फॉर्म्स अ गैमेटोफाइट. दिस स्पोरोफाइट will again form gametophyte. Sporophyte will form gametophyte and gametophyte will again form sporophyte. ये साइकिल चलते रहता है, ठीक है? बट इसमें कौन सा पेरेंट वाला फॉर्म है, कौन सा चाइल्ड वाला फॉर्म है, वो तुमको याद रखना है. चाइल्ड वाला फॉर्म इज स्पोरोफाइट which will grow into the parental form which is gametophyte. Okay, बस इस तरह से करना है, सिंपल. Okay. One more thing,
Write down the functions of these different parts. So write the function of capsule dash, they produce spores, और spore formation कर लो simple. Okay, next number 2, seta का function लिखो, they transfer water and nutrients. They transfer water and nutrients from the gametophyte to the sporophyte. From the gametophyte to the sporophyte. इस डायरेक्शन में ट्रांसफर करता है. From the gametophyte to the sporophyte. Transfer nutrients and water from the gametophyte to the sporophyte. The last one is food. Food में लिख लो, provides anchorage to the sporophyte. That's it. ये हुआ sporophyte का कहानी खत्म. Let me erase this. ये हुआ हमारा first part, that is liverwort का part खत्म. Second part is about mosses. So let's start mosses. Give the heading mosses. Mosses. Once again, write the dominant form of mosses. The dominant form of mosses is क्या होगा? Same होगा ना, जो पीछे था वही था. The dominant form of mosses is the gametophyte. Is the gametophyte. Okay. Next line. The gametophyte has two stages. The first stage is called the protonema stage. And the second stage, the first stage is called protonema stage, and the second stage is called leafy stage. Leafy stage. Protonema stage and leafy stage. अच्छा, protonema stage क्या होता है? इसमें लिख लो, creeping structure. It is a creeping structure. Creep करता है. It creeps on the ground. This is the ground. It creeps on the ground. Okay. While leafy stage is a leaf-like structure. It's a leaf-like structure. If it's a leaf-like erect structure. कुछ इस तरह से. It's a leaf-like erect structure. Okay, so ये हो गया हमारा protonema and leafy stage. One more thing, complete sequence नीचे लिख लो. Protonema, make a flow chart for this. Protonema forms primary protonema. It divides to form. Protonema divides to form primary protonema. This primary protonema further divides. फिर से divide करेगा to form secondary protonema. This secondary protonema further divides to form the leafy stage. ठीक है, ये सीक्वेंस याद करना. So I can say that leafy stage originates from secondary protonema. Examples याद कर लो. Examples of mosses. Sphagnum, Funaria. ये दो examples याद कर लो. Sphagnum underline कर देना because they are scientific names. Sphagnum and Funaria.
rest is everything same, rest everything is same. Okay, so लाइफ साइकिल भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं. चलो इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ लाइफ साइकिल. एक मिनट. सो एक ट्रिक लिखते हैं. सो जरा सा फिर से वही स्पोर्टी नेम है, गेम है. एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड हो गया. किसका? बॉस का. ओके, जरा सा स्पोर्टी नेम है, गेम है, बॉस का. तो ये देखो जरा सा फर्स्ट क्या है? जाइगोट. ऑलवेज स्टार्ट विद जाइगोट. जाइगोट से क्या मिलेगा? सा सेम है ना. क्या था? स्पोरोफाइट. दिस स्पोरोफाइट will form spores. The spores will develop to form name. What is name here? Name is protonema. Name is protonema. So protonema. In the last case, that is in case of liverworts, क्या था? जरा सा स्पोर्टी गेम है भाई का, राइट? मतलब ब्राफाइट इन जनरल की बात में कर रहा था मैं. तो यहाँ पर ब्राफाइट वाला टर्म एग्जैक्टली फिट नहीं होता. यहाँ पे जरा सा स्पोर्टी तक तो ठीक है, बट दिस टर्म नेम है एक्स्ट्रा आ गया. नेम मीन्स प्रोटोनीमा. ना प्रोटोनीमा जब तुमको दिमाग जब भी क्वेश्चन में आएगा प्रोटोनीमा एग्जैक्टली अगर तुम बात करो तो दिस इज द कंप्लीट स्टेज फॉर प्रोटोनीमा, राइट? इसको भी तुमको अलग से याद करना होगा. प्रोटोनीमा फॉर्म्स प्राइमरी प्रोटोनीमा which again forms secondary protonema which again form the leafy stage. So I will not write the complete stages over here. I'll just write protonema. Okay, that is sufficient. And with this protonema हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि प्रोटोनीमा का मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, लीफी. ओके ओके. तो जरा सा स्पोर्टी नेम है, गेम है. इसके बाद गेम है. गेम मीन्स gametophyte. And if there is a gametophyte, it will obviously produce the different gametes. The male gametophyte will produce a male gamete, female will produce female gamete, right? And these two gametes will ultimately fuse to form zygote. So this is the life cycle of mosses. तो मॉसेस के लिए यहाँ पर है बॉस. ठीक है, तुम यहाँ मॉस का भी कर सकते हो ट्रिक को अपने हिसाब से. यू कैन ऑल्टर थिंग्स. या माँ का भी लिख सकते हो, बट बॉस या मॉस तुमको जो इजी लगे वो कर दो. माँ का अच्छा नहीं लगेगा ना. तो जरा सा स्पोर्टी नेम है, गेम है, बॉस का, ये अच्छा लग रहा है, या मॉस का. ओके, दैट्स इट. तो ये हमारा लाइफ साइकिल एग्जाम्पल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. सो विद दिस हमारा जो डिस्कशन है ऑन ब्राफाइट ends here. Okay, I thought कि मैं next part start कराऊँ, but since there's a lot of information in case of graphite, so easily digest करो. ठीक है, ये चैप्टर बहुत कुछ लर्निंग प्रोसेस है, इसमें बॉटनी वाला पार्ट है, लर्न करना पड़ेगा. तो मैं धीरे धीरे करके चल रहा हूँ. नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करेंगे टेरिडोफाइटा, एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट बोथ टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म्स इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट द होल चैप्टर इटसेल्फ. मैं खत्म करने की कोशिश करूँगा. नेक्स्ट डे पूरा सारा चीज़ खत्म होगा. प्लांट किंगडम विल एंड. After that we'll start morphology. तो ठीक है, पढ़ते रहो, कीप लर्निंग, एंड डाउट्स हो तो मुझे पूछो. बाय बाय.